गड़बड़ कर दिया. Do you get it? All the students, do you get it? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So till date we have working on text files. Now we are changing the mode from Good text morning, file sir. to binary file. Text file to binary file. So here, what are the binary files and what is special about it? So binary files are any files in which the content is not saved in readable sequence of characters, as we have done in character file. Whatever we store onto the file, it is seen as it is, whereas in the binary file it is not so. So when opened in the text editor, binary files, when you open the binary file in the text editor, this is not visible as you uh, input the values, whereas in the text editor or text file, whatever you store into the file, they are visible as it is, the lines are visible as it is, and you can create the text file using the notepad as well. Binary files can range from image files like JPEG or JPG files, or GIF, audio files like MP3s, or binary documents formats like Word or PDF. The data is stored as a collection like list and dictionary or object of a class will also come under binary file, where the data other than a string will be converted to its byte equivalent ASCII or Unicode character before it is being saved. In Python, files are opened in text mode by default, but for the binary file and so on, and files in binary mode, when specifying a mode, add b to it. So while creating a binary file in the Python, you will have to use the character b, which signifies binary. For example, read mode will become rb, means read binary. Write mode will become wb, means write binary, read binary. And append mode will become AB, that is append binary, and read write mode will become AB plus. So if you want to read or write into the binary file, you will use AB plus. This should be the mode of opening the binary files. Fine. In Python, binary files can be created using Pickle and JSON. JSON is nothing but JavaScript object notion or C pickle modules. So pickling is a way of dumping the values into the binary file and reading the values from binary mode. So pickle is used for serializing and deserializing Python collections object structures. Serialization refers to the process of converting collections objects in the memory to a byte stream that can be stored onto disk or sent over a network. Later on, this character stream can then be retrieved and deserialized back to a Python object. Pickle is specific to Python module, thus cross-language, even cross versions of Python compatibility is not guaranteed, because uh, the information
written onto the binary file using Python, they might create problem while you switch from Python to C++ or C, any different languages. So this becomes a cross language versions. So from Python to other language, this is a problem. So it cannot be guaranteed that binary file written in the Python can be read into C++ or C. So Python binary files are different from the files from C++ or C or any other language. Okay. So what can be picked up from the binary files? We can pickle. Pickle is made from pick. We can pickle collection objects with the following data types. Like data types would be Boolean, integers, floats, complex numbers, normal and Unicode, strings, tuples, lists, sets, and dictionaries that contain pickable objects. So the lower part is the example of pickable objects. You can write in this form. You can write Boolean, you can write list, you can write tuples, you can write dictionaries, you can write strings, you can write real numbers. Everything you can write in a binary file, and accordingly they are processed as per your need. So this is the pickle module. So what is the format of the pickle module? This is pickle.dump, and what is inside the round braces or round brackets or parentheses? Number one, the collection or the object and the file object. Collection of the object may be list, tuple, dictionary, and file object is the file name or file variable. Write the pickled representation of the collection object to open file object file. So this should be the syntax, like object is equal to pickle dot load and the file object. So if I say rec means record is equal to pickle dot load and the file variable or file object. Read the pickled representation of collection or the objects from the open file object file. Return the reconstituted object hierarchy specified therein. This is equivalent to unpickle. Hope the syntax is clear of pickling and unpickling the values of the file. So this is for dumping the values, pickle.dump, and this is for loading the content of the binary file which are stored in some data file. So in that case, we'll use pickle.load, and the data will be picked up or unpickled and will be stored in the object which is given here. So this arrow key signifies that data from the file is being stored in the object variable, and from in this syntax you see the collection whatever you give or you take through input will be stored onto the file through this file object. Next, there are some examples. So over here, the first example, the name of program is 1.py. So over here, the first sentence you should include in your binary file program, that is import pickle. This is must.
So while creating any binary file program, you will have to use import pickle first, and then you'll write the program. So see this line where with open first comma wb as f. So f is the file object and first is the name of the file, and wb means you are creating a file in binary mode. So the example says I am going to dump the data like pickle.dump in the form of the list. So this data 12 Amar, this is a list, will be dumped into F, and through F it goes to first. Hope there is no problem at all. Right. So the next program is 2.py. In this example, I am going to read the binary file. So in place of WB, I'll use RB, means read binary file. As f is the file object, and here I'll use pickle.load. And see, I had used pickle.dump in writing mode, and so I wrote a list onto the file, that is first binary file. So this list was written onto the binary file, and over here I am going to load the binary data from the file first, and this will be printed. F is representing first, and so through this F, the data which is written onto the first binary file will be picked up and will be printed here. So over here I have written 12 Amar. This is a list. It goes to 1.py. Through this file of through this program, I am going to write this list, or I am going to dump this list onto the first. So you'll see when you dump this, the information 12 Amar will be transformed into this kind of characters which are not readable. So this is the difference of binary file if you compare this binary file with the text file. So in binary file, when the data is dumped, this is converted into uh, the binary mode, or you can say the machine mode. And if you open this first file using notepad, you will see the characters will look like which are not readable. But when you read the file or load the file through this program 2.py, but in 2.py I am using the file first, and in place of wb I am using read binary. So when you say pickle dot load, so it will read the content of the file first and will print it on the screen. So after printing you'll get this output, and this output is in list shape. Hope this example is clear to you. Yes, sir. So you will write these two programs as examples on your Python ideally, and it will give you the clear concept of reading and writing the binary file. Next, third program, in place of first I have taken a file name 2.dat, because uh, this could be the data to write onto the binary file. So instead of taking single name, I have used uh, file name, proper file name,
The file name is TWO and its extension is DAT is nothing but signifies that this is a data file. And I am going to dump the entire dictionary in this file. So first step is to import Pickle. So this is here, import Pickle, and with open 2.dat, this is the file name, and this extension is uh, taken by us, and this is the convention of data file. That is why I have used DAT. And next is the mode of opening the file, that is WB. W to write the file, and B signifies binary file, and F is the file object. Means the 2.dat will be created in binary mode, and the object which will represent 2.dat is F. In the next line, I am dumping a complete dictionary onto 2.dat. So dictionary is having the pair of keys and values. So roll number 12 and name Amar. So this is the complete dictionary, and I am dumping this dictionary to 2.dat through F. F is the file object. So through F, this information goes to 2.dat. Now in the next segment, I am going to read the content of 2.dat. So see here, this input is to be stored onto the 2.dat, and the program name is 3pi. So the content of 2.dat will be like this. Suppose roll number, whatever you have given. So roll number is 12 and name is Amar, but it is not in readable file. It is not a readable file. So the content of this 2.dat is not clearly visible to you, and you cannot judge what is this. But when you load this information from 2.dat, you'll be able to read the content of the file. So this is like this: import Pickle with open 2.dat, the same file we are going to read. And now this is in RB mode. R for reading the file, which is in the binary mode, and F is the file object. So F is representing 2.dat. Now how to load the information from 2.dat? So I'll use pickle.load. So if you say print pickle.load, the information stored onto 2.dat is printed in the form in which it was saved onto the or dumped onto the file. So since I had dumped a dictionary onto 2.dat, that is why while loading the information from 2.dat, it will load a complete dictionary, and when you say print, it will print the complete dictionary. So you can dump the information in the form of list, in the form of dictionary, in the form of numbers, in the form of strings, whatever you want. But in text file, it was not there, because when you dump the information onto the binary file, this file or the content will be transformed into machine codes, and these codes are not readable. User cannot read the file and or the information. But if you want to read the information, you will have to use load function of pickle module. So pickle.dump will write the information onto the file, and pickle.load will load the information from the binary file. Okay, now next,
code to write member number and name to member.dat file. तो सी दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को अगर आप देखते हैं तो वी हैव क्रिएटेड a user defined function here. The function name is def write data, and before writing the information we have to import pickle, otherwise we will not be able to dump the information onto the file. That is why importing pickle is mandatory. Okay, so in this program or in this function, what we have opened a file like this way with open member.dat is a file, member is a file name, dot dat signifies this is some data, and mode is wv means writing a binary file, as app is the object of the file which will represent member.dat. Now next, so this process is continuously taking the information from the user. So I am taking member number like MNO is equal to int input MNO, and name as input name, and after taking the values of member number and name of the member, we are dumping this information onto the file in the form of the list. So this is clearly visible that I'm going to dump a list onto the file one at a time. And list is the collection of two fields. Those are member number and the name. So now this collection, this list will be dumped onto the file. So after taking this information, and on this place we have dumped the information onto the file, and I am asking whether you want to continue or not. So C is equal to input more, yes or no. If you enter Y, it will continue taking the values, and if you say no, it will come out of the function. So in this case, if I say yes, more, yes, now in case of more, it will ask the member number and name again, and again the information is the information forms a list, and that list will be dumped onto the member.dat. And when you say if C in the tuple values n और n, यानी C की जो वैल्यू है अगर आप मोर नहीं चाहते हैं यानी ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा. सो फंक्शन विल बी टर्मिनेटेड हियर. So this is the program run. Though this sentence is not there, this will be seen in the end because this is the part of the main program. Hmm, 20 minutes. Okay, so now next, code write, not write. Strong read mno and name from member.dat. So I am going to sorry मैं इसको चेंज यहीं कर देता हूँ अदरवाइज दिक्कत आएगी. So code to read mno and name from member.dat.
jet. So it's a very simple again. So in place of WB, I am going to use RB here. So when you say this is again a user defined function with open member dot dat reading in binary mode as f is the file identifier. So the code says इसको कंटिन्यू करिए जब तक कि आपकी फाइल एंड ना हो जाए and as soon as the file cursor reaches the end of the file, it will come out of the loop and it becomes the loop turns to false. So while true means जब तक फाइल के अंदर डेटा है, you'll use try and except means exception handling. So जैसे ही डेटा खत्म हो जाएगा, it automatically comes to except and comes out of the function. So over here, what I am doing, I am reading the information from the file. So how to read the file information from the file? I'll use the object, the record object. R is equal to pickle dot load from the file. What is F? F is representing member dot dat. Member dot dat. So from member.dat, I am going to read the information and printing the information through R because I am loading the information and storing into R, and after storing the value into R, I am going to print it. So there were only two records or two lists. One say Ramu Kaka and second is member number is 3 and Jamna Bai. These were two records in file member.dat which we had done on previous slide. Member number is 1 and name is Ramu Kaka. More you said yes. Then it took another value. Member number is 3. It took another name, say Jamna Bai. And when you say no, it closes the file and comes out of the function. And over here, I am reading the same information from member.dat and this is being printed here and I am reading the information through pickle.load. So this will be the output. Now the third option is add. Add means append. So in place of RB, I will have to use AB. A for append. So over here, I have written a function called add data with open member.dat and in place of RB I am using AB, A for append, B for binary mode and F is the file object. Again, until you say N, it keeps on taking the records. So while true, I am taking the member number, MNO is equal to int input MNO, name input name, and after taking these two values, we will dump this information onto the file in the shape of the list. Okay. Now again, when you say C is equal to input more yes or no, if you say no, it stops taking the character or the values, and if you say yes, it keeps on taking the values from MNO and NAM. So it depends on you. So in this case, I have given a value, MNO value is MNO value 5 and name Bilu Bhai, and in the end when this statement like C is equal to input more yes no is encountered, I give N and N is satisfied here because
if C in n और n, दिस इज टपल, या तो n होगा n C की वैल्यू या फिर स्मॉल n होगी, तो आपको ब्रेक करना है, अदरवाइज इट विल गो टू while true. So this way you can append the values in member.get. So over here, uh, we have discussed how to write the information onto the file in binary mode, how to read the information from the binary file, and how to append or how to add the information to the binary file member.dat. So again display. Now this time I am going to display the entire information because on the previous slide I had used mode append AB. It means previously there were only two records, and from the last slide we had added one record, and now the file member.dat will have or will have three records, and those three records I am going to print it. So to print those records I will have to use load function of Pickle. So over here again, this is the function, the same function which I had discussed earlier, like while true try pickle.load f and print r, and as soon as the cursor reaches the end of the file it gives a break, so it comes out of the function. So there are three methods we have discussed, okay, and I hope you will try them on your system. And इम्पोर्टेंट ये है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जो अपेंड फंक्शन है उसमें हमारा जो कर्सर होगा वो फाइल के एंड में होगा ना? Obviously, when you open a तो सर file in append mode, the file pointer or file cursor reaches to the end of the file. Yes बेटा बोलो, आगे बोलो। तो सर हमने अ, तो सर हमने लास्ट में जो ये इंफॉर्मेशन ऐड की थी, जो अपनी लास्ट लिस्ट थी, वो अपनी थर्ड वाली जो लिस्ट है, मतलब जो सेकंड वाली लिस्ट है, उसके साइड में आनी चाहिए थी ना? तो साइड में तो है ये तो, इट इज द सर फॉर्मेट ऑफ प्रिंटिंग आर प्रिंट। वो तो अगर आप प्रिंट करना सेम लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं तो आप एंड लगा लीजिए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाइनरी फाइल के अंदर ये कभी नहीं होता कि वो फॉर्मेटेड वे में इनपुट को सेव करे। बाइनरी फाइल डज नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन इनटू ए फॉर्मेट। बाइनरी फाइल में यस जो सर, डेटा वो तो जैसा है। भी बट हाँ पर हाँ सर बोलो। जो उसका कर्सर रहेगा वो तो जो हमारी लिस्ट है उसके ओके ओके एंड ओके में ओके होगा ओके, ना? यू यहाँ पर कंफ्यूजन कर्सर का है। दिस कर्सर इज अ फाइल कर्सर, नॉट द प्रोग्राम कर्सर। गॉट इट? ओके आप सर। जब स्क्रीन पे काम यस। कर रहे हैं तो वो कर्सर डिफरेंट है। आप एक काम करिए, इसको डिफरेंशिएट कर लिए। इन प्लेस ऑफ कर्सर आई विल डिनोट इट एज a file pointer. ओके In सर। place of cursor I'll use file pointer, right? So file pointer हम यूज करेंगे। यस सर। तो बाइनरी फाइल में सर फॉर्मेट एक में। और डाउट। हाँ जी बोलो। सर अपेंड फंक्शन यूज करने के लिए हमारी फाइल में ऑलरेडी कुछ होना जरूरी होता है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तो सर मतलब अपेंड अपेंड फंक्शन का से अगर मतलब हमको ये कोई है नई कि फाइल। अगर कोई ऑलरेडी इंफॉर्मेशन फाइल के अंदर है तो उसके एंड में नई इंफॉर्मेशन ऐड होना शुरू हो जाएगी। बट इफ यू यूज राइट एनी डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब ये है कि अगर कोई प्रीवियस इंफॉर्मेशन है तो वो खत्म हो जाएगी और नए तरीके से वैल्यू उसमें स्टोर होना शुरू होंगी। तो दिस इज द डिफरेंस। यस सर। क्लियर? थैंक यू सर। एनी यस अदर सर। डाउट? नो सर सर। ओके ओके सर ओके। हाँ बोलो। सर मैं पूछ रहा था सर, अगर वो यानी जो हमारा ये पिकल फंक्शन होता है ये लाइन बाय लाइन रीड करता है? व्हाट हैपेंस इन पिकल फंक्शन, जो इंफॉर्मेशन होती है वो साइज के हिसाब से रीड करता है। जो रिकॉर्ड पॉइंटर होता है रिकॉर्ड के साइज के हिसाब से चलता है, फॉरवर्ड होता है फाइल के अंदर। ठीक है?
मतलब सर जैसे हमने फर्स्ट लिस्ट डाली थी, यानी मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारे लूप लगाने का क्या मतलब हुआ? लूप लगाने का मतलब ये हुआ कि initially when you open a file, the file pointer sets onto the first record of the file. So it has to read the record one by one, and that is why putting the loop is mandatory. यानी सर वो एक साथ पूरी फाइल को रीड नहीं करता? No, 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 no. One at a time. एक एक रिकॉर्ड वो, हाँ सर। ये दिस इज नॉट अ टेक्स्ट फाइल जो रीड मी और रीड लाइंस वगैरह आप यूज करोगे, ऐसा नहीं है। रीड लाइन रीड लाइंस में क्या होता है, कंप्लीट फाइल रीड हो जाती है, और रीड लाइन में एक ही लाइन रीड होती है टेक्स्ट फाइल के अंदर। तो दिस इज और नॉट सर लाइक दिस। अगर हम हाँ, और सर अगर हमने जब अगर डाटा डाला था, अगर हम उसी में एक साथ 2 लिस्ट डाल दिए होते, तो भी क्या वो अलग-अलग लिस्ट को एक-एक बार में रीड करता है, या वो जो दोनों लिस्ट एक साथ डाली थी उनको एक साथ रीड करता? जैसे जैसा भी आप फॉर्मेट दोगे उसी के हिसाब से रीड करेगा। अगर आप दो देते हो तो दो रीड करेगा, और अगर आप एक देते हो तो एक रीड। वो अगर दो लिस्ट लेकर के देते हो और एक ही अटेम्प्ट में डालते हो तो एक ही रिकॉर्ड माना जाएगा। दोनों की दोनों अ, जो लिस्ट हैं एक ही साथ रीड की जाएंगी। अच्छा सर। लेकिन एक चीज और यानी भी है, एक चीज और भी है यस कि सर। जब आप उसको डंप कर रहे हो तो डंप पे डिपेंड करता है कि आप दोनों एक साथ कर रहे हो या एक एक कर रहे हो। अगर एक एक कर रहे हो हाँ तो सर। वन बाय वन ही रीड करेगा, और एक साथ डंप कर रहे हो तो एक साथ रीड करेगा, क्योंकि यानी उसका मैं फॉर्मेट होना यानी चाहिए। यानी हाँ, अगर हमने ये तीनों जो हमारा अभी डाटा है, ये तीनों लिस्ट को अगर हम एक साथ डंप करते तो वो एक साथ रीड करके नो नो देता नो हमें? नो नो नो, आप ये मान लीजिए कि जो स्ट्रक्चर है हमारा फाइल का, जो स्ट्रक्चर है उसी हिसाब से यस। फॉर्मेट लेगा। अगर आप तीनों के तीनों साथ डंप कर देते हो उसके बाद भी वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड ही रीड करेगा, नॉट ऑल एट ए टाइम। अच्छा सर, ठीक है, ठीक समझ है, गया। वन बाय वन यस ही सर, रीड करेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। So there are three functions we have discussed. Number one, write data. Number two, read data. And number three, add data. अब जो है इसके अंदर हमने जो प्रोग्राम बनाना है, इस प्रोग्राम को मैं आपके लिए देता हूँ। एक मेन प्रोग्राम बनाइए, उसके अंदर आप ये लिखिए प्रिंट, एंटर द ऑप्शन W टू राइट, R टू रीड, एंड A टू ऐड, एंड X टू एग्जिट। ये मेन्यू आप यानी ये तीनों फंक्शंस जो मैंने लिखे हैं, आप इन तीनों फंक्शंस को एक ही प्रोग्राम के अंदर कंपाइल करोगे। यानी पहला स्टेटमेंट होगा इंपोर्ट पिकल, फिर उसके बाद फंक्शन शुरू होगा, वो फंक्शन होगा डेफ राइट डेटा। दूसरा फंक्शन आप उसके नीचे बनाओगे, वो फंक्शन होगा रीड डेटा। तीसरा फंक्शन आप बनाओगे वो होगा आपका ऐड डेटा। और उन सब के बाद आप बनाओगे मेन प्रोग्राम, उसके अंदर आप लिखोगे प्रिंट W टू राइट, और आप कह सकते हैं ऑप्शन इज इक्वल टू इनपुट इन ब्रैकेट W राइट R रीड, यानी ये वाला ऑप्शन। एंड फिर आप उन ऑप्शंस को चेक करोगे। इफ ऑप्शन इज इक्वल टू W, you will call write data. If the option is R, then you'll call read data. And if you have given option A, it will call the function add data. And if you enter X, it will come out of the loop. So over here also, while you can use while true, and in the end use option in X or small x, then break. तो ये जो लोअर पोर्शन है वो आपको डिजाइन करना है। तो मैंने तीन फंक्शंस बना दिए। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप इन तीनों फंक्शंस को कर पाएंगे, यानी एक प्रोग्राम में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर जो कर लेते हैं वो आप मुझे क्लासरूम पर अपलोड कर दीजिएगा, और नहीं तो फिर हम कल डिस्कस करते हैं, यानी नेक्स्ट ईयर में डिस्कस करते हैं। ओके सर। ठीक है ना। तो आज मैंने केवल बाइनरी फाइल में क्रिएशन, रीडिंग एंड अपेंड तीनों बता दिए। अब हम आगे कोई इंफॉर्मेशन और यूज करेंगे, और इसके अंदर हमने एक्सेप्शन भी यूज कर लिया है, एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज कर ली है।
क्योंकि फंक्शन के अंदर हमें फंक्शन से बाहर भी आना है या रीडिंग राइटिंग से बाहर आना है, तो एक्सेप्शन भी हम साथ साथ यूज करते जा रहे हैं। तो ये आपको आगे हेल्प करता जाएगा कि अगर कोई वाइवा में पूछता है एक्सेप्शन क्या होता है, तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके। और जो कुछ भी हमने अभी डिस्कस किया है, जो आपके पास लिंक आया है, वो लिंक रीडेबल है। इस लिंक को मैं आपकी क्लासरूम में ऐड कर दूंगा। होप दिस इज क्लियर। यस सर। तो आज का हमारा जो डिस्कशन था वो इतना ही था। ये मैंने आपको टाइम दिया है कि आप इस छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, इनको आप चला के देख लो। ठीक है, चला के देख लो, फिर इस पे बेस्ड हम आपको एक प्रोजेक्ट देंगे, तो आप इन तीनों तीनों ऑप्शंस को लेकर के प्रोजेक्ट करना। ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट इसमें नहीं कराएंगे, फाइल्स में नहीं कराएंगे, हम प्रोजेक्ट तब कराएंगे जब हम थोड़ा MySQL एंड पाइथन की कनेक्टिविटी कर लेंगे। यस कुशाग, कुछ बोलना चाह रहे हो? सर सर हाँ कर दीजिए, निखिल कर दीजिए। मैं क्लास ही पुश ऑफ कर रहा हूँ, क्लास एंड कर रहा हूँ। सर हाँ, सर वो लास्ट क्लास मिस हो गई थी, तो सर उसकी रिकॉर्डिंग डाल दीजिए। मेरे ख्याल से डली हुई है, डाल नहीं दीजिए। मिली थी सर मुझे, या उससे पहली वाली की तो मिल गई, यानी लास्ट से लास्ट वाली वो तो थी। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ, देख लेता हूँ, रुको एक मिनट। तो दोनों अच्छा ठीक है सर। दोनों है, ठीक है। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। ओके। सो चलिए, इनको आप ट्राई कर लीजिएगा, बाकी जो अगला है हम आगे बोलते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा, Thank you, sir. थैंक यू। बोलो। हम अपने स्कूल की हेल्प डेस्क क्यों नहीं बना सकते? कैसे? ऑनलाइन हेल्प डेस्क। हाँ, सही कह रहा है, कॉल करते हैं। और